अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिवाइस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे इसका नाम है Realme 10 Pro Plus। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है गैजेट टेक रिव्यूज़, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Realme 10 Pro Plus, release 2022, the 24th of November, 173 grams, 175 grams, 7.8 mm thickness, Android 13, Realme UI 4.0, 128 GB, 256 GB storage, no car, 6.7, 1080 times 2000, 412 pixels, 108 MP, 2000. 160p 612 GB RAM, Dimensity 1080 5000 mAh, Network Technology GSM, CDMA, HSPA, CDMA 2000, LTE, 5G LAUNCH, announced 2022, the 17th of November, status available. Release 2022, the 24th of November, BODY dimensions 161.5 times 73.9 times 78 mm or 8 mm, weight 173 grams, 175 grams, 6.10 ounces, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, display type AMOLED, 1B colors, HDR10 plus, 120 Hz, 800 nits, size 6.7 inches, 108.0 square centimeter, approximately 90.5% screen to body ratio, resolution 1080 times 2000, 412 pixels, 29 ratio, approximately 394 ppi density, platform OS Android 13, Realme UI 4.0. Chipset MediaTek 6877 Mozambican Metical V, Dimensity 1080 6nm, CPU octa-core, 2 times 2.6 GHz Cortex-A78 and 6 times 2.0 GHz Cortex-A55, GPU. Mali G68 MC4 memory card slot, no internal, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, main camera triple 108 MP, f1.8, 24 mm, wide, 1.67, 0.64 MPDAF 8 MP, f2.2, 16 mm, 112 ultra-wide, 2 MP, f2.4, macro, features LED flash, HDR, piano RAMA video 4K 830 fps, 1080p 830, 60, 120, 480 fps, 720p 8960 fps, Euroeyes selfie camera single 16 MP, f2.5, 25 mm, wide, features panorama video 1080p 830 fps, sound loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5 mm jack, no 24-bit, 192 kHz audio comms, WLAN Wi-Fi, 802.11a, B, G, N, AC, 6, dual band Bluetooth 5.2, a 2dp, LE, apps HUD positioning GPS, L1 plus L5, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS NFCS, market, region dependent, radio no USB Type-C 20 FE8 URES sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass, battery type LiPo 5000 mAh, non-removable charging, 67W wired, PD 3.0, 50% in 17 minutes, advertised, MISC colors dark matter black, nebula blue, hyperspace models RMX 3687, RMX 3686, price $269, 26,999 rupees, TSTS performance AnTuTu 522376, V9, Geekbench 2371, V51, FS Bench 23 fps, ES 3.1 on screen, display contrast ratio
infinite, nominal camera. Photo, video loudspeaker 25.4 LUFS, very good. Battery life endurance rating 149 hours. अब हम इस फ़ोन की पिक्चर्स और 3D इमेज को देखते हैं और साथ में हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसी स्पेसिफिकेशन दी गई है और इस फ़ोन के लिहाज से अच्छी है स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन नॉर्मल है। आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। जो स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा दिया गया है, स्क्रीन साइज़ जो है 6.7 इंच दिया गया, बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ दे दिया गया है। इसमें अच्छा स्क्रीन साइज़ है और इसके जो पिक्सल हैं वो भी अच्छे दिए गए हैं। 1080x2412 पिक्सल दिए गए हैं स्क्रीन के। और कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, बहुत बड़ा कैमरा दिया गया इसमें भी, और अच्छी पिक्चर रेजोल्यूशन दी गई है। इसकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी है और PPI डेंसिटी भी अच्छी है, जिससे आपको अच्छे ग्राफिक मिल सकते हैं इससे गेमिंग के दौरान। और अगर आप कैमरे को देखें तो कैमरे में अगर आप पिक्चर्स बनाते हैं और टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं तो आपको अच्छी टिकटॉक वीडियोस और पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। और रैम की बात करें तो इसमें यह वेरिएंट दो रैम्स में आता है, 6 और 12 GB रैम में आता है। और इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, यूनिक लगा हुआ है, न्यू जनरेशन चिपसेट लगा हुआ है। और इसमें जो बैटरी आती है वो भी बिग बैटरी आती है, 5000 mAh की बैटरी लगाई है जो आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देगी। और स्टोरेज की बात करते हैं, 2 स्टोरेज में अवेलेबल है। इसमें कार्ड स्लॉट मौजूद नहीं होती। जो स्टोरेज है वो 128 GB और 256 GB स्टोरेज में अवेलेबल होगा। कार्ड स्लॉट इसमें मौजूद नहीं है। जो एंड्रॉयड आते हैं 13 आता है इसमें। और बाकी ओवरऑल फ़ोन जो है लुक देखने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। जो कैमरे की पोजीशनिंग दी गई है वो भी बड़ी बेहतरीन दी गई है। और जो इसकी मोटाई देखें तो वो भी बहुत कम है, देखने में भी स्टाइलिश है और बेहतरीन कंप्लीट डिवाइस है। अब हम इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी पिक्चर्स बना सकता है, अच्छी रेजोल्यूशन में, डे में भी अच्छी पिक्चर्स बना सकता है और रात में भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। और जो इसका रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी है और पिक्सल भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसमें। जो कैमरे की Realme ने इसकी प्लेसिंग की गई बैक साइड पे वो भी बहुत अच्छी लोकेशन पे की गई और यूनिक स्टाइल में की गई है। एक यूनिक स्टाइल और लुक दिया गया है इस फ़ोन को। और इसमें जो रैम और स्टोरेज दिया गया है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। और ये जो पाकिस्तान में 83,000 की प्राइस टैग में आता है, इस प्राइस टैग में कोई और कंपनी इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं ऑफ़र कर रही जितनी ये कंपनी पाकिस्तान में अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफ़र कर रही है। इसमें आपको पिक्चर्स का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, अगर आप वीडियो बनाते हैं वीडियोस का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और इससे आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसकी जो है वो स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी मिली है आपको। और इसमें आप एक बात है कि इसमें जो बैटरी दी गई है वो भी बड़ी बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इससे आप गेमिंग करें और बैकअप जो बैटरी टाइम है वो भी अच्छा मिलेगा आपको और बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही है। और इसमें जो PUBG चला कर देखी गई है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है PUBG का, खेलने में ग्राफिक भी अच्छे हैं इसमें और लिहाज से कंप्लीट कम्पैक्ट डिवाइस है ये।